अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 19 का टॉपिक मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी को समझते हैं। Here is mass defect definition: the difference between mass of nucleons and mass of nucleus is called mass defect. Scientists observed that the mass of nucleons, that is the sum of masses of protons and neutrons, is greater than mass of whole nucleus. This mass difference termed as mass defect. Scientists thought that by the determination of mass of proton and mass of neutron, it is very easy to calculate mass of nucleus. So they added mass of separately protons plus mass of separately neutrons. They think they got the mass of that nucleus. But in some experiment they observed that the required product is not obtaining according to their calculated mass of nucleus. Then they thoroughly observed that the mass of nucleus of the element is less than the mass which they have calculated by the sum of protons masses and neutron masses. So they termed mass defect. Let mass m, mass of nucleons, the number of particles present in the nucleus, that is protons and neutrons. So m, mass of nucleons, m naught, mass of nucleus. Delta m, mass defect, that is the delta m. Delta means change in mass. So mass of nucleons m minus mass of nucleus is the delta m. This is called mass defect. तो स्टूडेंट साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम अलग अलग प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास जितनी क्वांटिटी मौजूद है न्यूक्लियस में उनके मासेस को ऐड करते हैं तो मास ऑफ न्यूक्लियस बनता है। मगर साइंटिस्ट को क्या देख मिला कि जो वो मास ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट कर रहे हैं वो वैसा न्यूक्लियस का मास नहीं मिल रहा। तब उन्होंने टर्म बनाई मास डिफेक्ट कि सेपरेटली मास ऑफ न्यूक्लियस ज़्यादा है और कंबाइनली मास ऑफ न्यूक्लियस कम है। तो मास ऑफ सेपरेट न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, तो उनको मिला डेल्टा एम। द डिफरेंस बिटवीन दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। अब ये मास गया किधर? This delta m will be used for binding energy for nucleus. अब नेचुरली थोड़ा थोड़ा मास प्रोटॉनों से न्यूट्रॉनों से वो बना डेल्टा एम और वो यूज होगा न्यूक्लियनों को एक जगह बांधने के लिए। दैट इज टर्म्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। Here is binding energy, the energy required to bound the nucleons, that is protons and neutrons in the nucleus, is called binding energy. यानी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को एक ही जगह पर रखने के लिए क्या होता है, कुछ एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? इन्हीं प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों के थोड़े थोड़े मास का हिस्सा होगा जो कन्वर्ट होगा बाइंडिंग एनर्जी में। कहां से मिलेगा? वो मास डिफेक्ट से। अब बाइंडिंग एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय मास डिफेक्ट, दैट इज द बीई इज बाइंडिंग एनर्जी, कैपिटल बी डॉट ई, और फार्मूला बनेगा मास कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी डेल्टा एम मास डिफेक्ट सी स्क्वायर, वो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो बी डॉट ई बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं कि किस तरह हम हाउ वी कैन कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। लेट्स से वी हैव द सिंपलेस्ट न्यूक्लियस is deuterium, secondary hydrogen, has one proton and one neutron in the nucleus. So mass of proton 1.6725 or 24. Some
In some books it is written 2.5, in some books it is written 2.4. 10 power minus 27, and mass of neutron (1.6748 10 power minus 27). So by sum of mass of proton and mass of neutron, we get the mass of nucleon of the deuterium 1.6724 10 power minus 27 plus 1.6748 10 power minus 27. We get 3.3472 10 power minus 27 kg. This is mass of nucleons. M naught mass of deuterium nucleus, that is 3.343 10 power minus 27. So student, M naught mass of deuterium nucleus is this, and separately proton neutron mass is this. So mass defect delta M, M minus M naught, 3.347 10 power minus 27 minus 3.343 10 power minus 27, we get 0.0042 10 power minus 27 kg. This is mass defect between mass of nucleons of deuterium and mass of deuterium nucleus. Now see 3 10 power 8 meter per second binding energy delta mc square. So delta m 0.0042 10 power minus 27 into 3 10 to power 8 whole square, we get 3.78 10 power minus 13 joule binding energy of deuterium nucleus. Now converting in electron volt 1 divided by 1.67 10 power minus 19, we get 2.36 10 power 6 electron volt or 2.36 mega electron volt binding energy of deuterium. Thus we calculated the binding energy of deuterium. Now another term is also packing fraction. What packing fraction? The binding energy required for one nucleon, that is one proton one neutron, is called packing fraction. कि किसी भी एक न्यूक्लियन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के लिए कितनी बाइंडिंग एनर्जी चाहिए? इट इज अ क्वाइट इजी फार्मूला, P dot F packing fraction equals to binding energy divided by number of nucleons. For example, we have calculated binding energy of deuterium divided by deuterium nucleons, that is one proton one neutron, that is divided by 2, 2.36 divided by 2, we get 1.18 mega electron volt of packing fraction or required binding energy for one nucleon of deuterium.